Okay, so today we are going to discuss why should anyone take the first step towards investing. I mean, we have created this entire podcast, we have a website, and we are going into details on how to invest, etc. But why should one invest? Like, why not just put your entire money in an FD? Well, FD is a form of investing, or why not just let money lie in your savings account for that matter? So one important factor is inflation. Instead of you put the money in savings account or for that matter cash, the money will not do it. So inflation will increase. The inflation means basically the price of things that you want to buy in the world would increase. Be it property, be it car, be it child's education, anything that you see, the price increase over time. To match that, you need to have enough money to achieve those goals. So for example, if you let's say you are able to save 1 lakh rupees per month, so you will be able to save 12 lakh rupees in a year. Now, and let's say your child's education cost today is 12 lakh rupees. So today you can meet those education with the savings that you have. But since education costs tend to increase over a period of time and not necessarily at the conventional inflation rate, probably at a higher inflation rate. So to match that, you have to have a higher amount than what you should be having today. So to do that, you need to have a slightly higher amount of what you have saved today. तो अगर आप तुमने 12 लाख रुपए सेव किए साल के और उसका आज का खर्च 12 लाख रुपए है, तो उसका एजुकेशन 10 साल बाद चाहिए, वो 10 साल बाद उसको 15 लाख चाहिए होगा फॉर एग्जाम्पल। पर तुमने तो सेविंग तो पैसे 12 लाख रुपए रखे हुए लॉकर में, तो 12 का तो 12 ही रह जाएगा, तो तुम्हें 3 लाख रुपए फिर अपने पॉकेट से और लगाने पड़ेंगे। बट अगर पैसे को तुम फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो तो शायद 12 का 14 हो जाए, 15 हो जाए। इट विल मैच अप टू द प्राइस, फ्यूचर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। तो अगर तुम्हें कुछ भी चीजें खरीदनी है फ्यूचर में जिसकी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो तुम्हें आज से ज्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा। यूजुअली जो हम बेसिकली जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या इंडिविजुअल फाइनेंस डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर से, तो बेसिक आइडिया ये रहता है कि जो भी तुम्हारे गोल्स होते हैं उनको मीट करने के लिए तुम्हें इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से तुम वो गोल ही मीट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें रिटायर होना है आज से 30 साल बाद और आज के रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए तुम्हें, तो 30 साल बाद 1 करोड़ में नहीं होगा काम। 30 साल बाद जो तुम 10 लाख की कार खरीदने वाले उसकी वजह से 14-15 लाख रुपए हो जाएगी। या इवन रेंट जो तुम आज 20,000 रुपए दे रहे हो, अगर तुमने ग्रैंड फादर से अपने पेरेंट्स से पूछोगे वो 20 साल पहले कितना रेंट देते थे, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट बोलेंगे, शायद 1000 रुपए 500 रुपए ऐसा कुछ बोलेंगे। उस चीज को मैच करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। Got it. What are other reasons beyond this? Like, okay, inflation is one, but I'm sure inflation would. Is that the main reason, or is there something else that we should be bothered about or should look into? Inflation is one of the major reasons, and a lot of other reasons also revolve around inflation. So, one reason could be to meet your goals. So, for example, अगर तुमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, तुमने कोई गोल डिसाइड नहीं किया, तुम बस एफडी में पैसा डाले जा रहे हो, और एफडी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोई भी कंजर्वेटिव ऑप्शन जो भी फिक्स्ड रिटर्न देता है, लाइक 5%, 6%, 8%, अगर तुम उसमें पैसा डाले जा रहे हो और तुम्हारे एस्पिरेशंस ऐसे हैं कि वो उस पैसे से मीट नहीं होंगे, तो उसके लिए तुम्हें कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें और भी एवेन्यूज देखने पड़ेंगे। मैं इसका एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी की अर्निंग लाख रुपए महीने की है, मतलब साल के 12 लाख रुपए कमाता है और उसके एक्सपेंसेस 50,000 रुपए मंथ है, मतलब 6 लाख रुपए उसके एक्सपेंसेस हैं, तो 6 लाख रुपए वो सेव करता है पर ईयर। और लेट्स से वो पूरा ये पैसा डायरेक्ट कर देता है अपने गोल रिटायरमेंट के लिए, लेकिन उसका मन ये भी है कि उसको आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है फैमिली के। अब अगर इस गोल को हटा दो तो नॉर्मली उसके लिए शायद वो 50,000 रुपए या 6 लाख रुपए साल के काफी होंगे रिटायरमेंट गोल को मैनेज करने के लिए। बट क्योंकि इसके एस्पिरेशन ये भी है, इसको वो कैसे मैनेज करेगा, तो इसके लिए उसको कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे एवेन्यूज में देखना पड़ेगा जहाँ पे उसको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाए, मतलब एवरेज से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। या दूसरा तरीका ये भी दूसरा सोच ये भी हो सकता है कि मान लो तुमने सोचा है कि तुम्हें रिटायरमेंट 25 साल बाद लेना है, 30 साल बाद लेना है, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे लाइफस्टाइल गोल्स बदलते हैं, तो तुम कई बार ये सोचते हैं इंसान की क्या मैं जल्दी रिटायर हो सकता हूँ क्या, अगर मैंने जो 30 साल का गोल सोचा हुआ है क्या वो 25 साल में अचीव कर सकता हूँ क्या, या वो 20 साल में अचीव कर सकता हूँ क्या, या मैंने सोचा है कि मैं अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी लूंगा, या कोई लैंड पर लूंगा, उस पर कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, या कोई फ्लैट लूंगा जो मुझे 20 साल बाद लेना है, जिसमें मैं रिटायर होना चाहता हूँ। But 20 साल seems to be a longer time when you think of it. Is there an option, is there a way wherein I can try to achieve that particular goal slightly earlier? तो उसके लिए फिर तुम प्लान करते हो, और उसके लिए तुम प्लान क्या करोगे, प्लान करोगे कि वो गोल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये कुछ भी हो सकता है तुम्हारा सिर्फ एफडी से काम हो जाए, हो सकता है तुम्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है तुम्हें थोड़ा रिस्की डेट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना पड़े, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़े, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़े, भी हो सकता है। जो भी तुमने गोल डिसाइड किया हुआ है उसका एक पर्टिकुलर दायरा होता है,
दायरा इन द सेंस कि वो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तुम एक वेग गोल नहीं रख सकते। मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मैं 20 साल बाद अमीर होना चाहता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अमीर मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मैं 20 साल बाद चाहता हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो, वो एक स्पेसिफिक गोल हो गया। तो गोल It's के more भी definite, yeah, right. गोल के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्ट? तो इट हैज टू बी स्पेसिफिक, इट हैज टू बी अचीवेबल, लाइक इट हैज टू बी रियलिस्टिक। मतलब मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, 12 लाख रुपए साल की है, और मैं तुमसे बोलूँ कि मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए, Right. दिस इज लाइक अ वेरी अनरियलिस्टिक गोल। तो और बहुत ही मुश्किल होगा अचीव करना। तो गोल को टाइम बाउंड भी होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, कोई बोल नहीं। गोल तब होता है जब मैं बोलूंगा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद। Right. There are few things which define a goal, and when you define a goal, then you can chalk out a plan to achieve that goal. And then when you chalk out a plan to achieve that goal, then you can have different strategies to follow that particular plan. Then you can decide on what is investment, why should you invest, how should you invest, and those questions come later. So that is one part of it. Inflation की हमने बात की। एक और चीज है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे स्पेशली वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जिनके पास इवन आजकल के गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं होता है, तो उनके लिए वो हमेशा होना चाहिए, एक टेंडेंसी होनी चाहिए, या कुछ लोग सोचते भी ऐसा है कि आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। अभी रिसेंट टाइम ले लो, कोविड के टाइम बहुत सारे जॉब्स गए हैं लोगों के, बहुत सारे जॉब रिस्क पे है, बहुत सारे लोग 30%, 40%, 50% लेस सैलरी पे काम कर रहे हैं। Right. तो जब आप ऐसा सिचुएशन देखते हो और आप बात कर रहे हो 20 साल, 25 साल, 30 साल के लाइफ, या इवन फर्दर देन दैट, तो you must be rest assured that there will be a lot of ups and downs in those 30, 40, 50 years of cycle of life. Right. अब में तो सबको मजा है, सब कुछ अच्छा है, कोई चैलेंज है नहीं है सर। लेकिन when things are down, when things are not going your way, then especially in economic terms, then you have to rely on some other source of income. Now this source of income could be anything. This source of income could be interest from a fixed deposit. It could be dividend from a stock investment. It could be rent from your real estate properties. कुछ भी हो सकता है, or any hobby that can give you a second source of income. So when you do financial planning, when you think of why should you invest, investment is not also about goals and planning and strategizing and investing in different avenues. It also means if you are able to make a way where you are able to generate second source of income, that gives you a lot of leverage in life in general. So वो एक important चीज है। Some of the things that at least I look forward to is also like the fact that you can build a sort of a passive income stream, right? Like over a period of time, compounding kicks in, and it's very, very surprising, or rather counterintuitive, if you look at how, for example, Warren Buffett's wealth, personal wealth, has grown over a period of time, and you'll see it very lopsided towards the later years of his life, and he's basically reaping the rewards of compounding. An example of this was, I was looking at the HDFC equity fund recently, and like if you had, I know 20,000 in 2001 was a big deal, but if you maintain an SIP of 20,000 from 2001 onwards till 2020, I mean the amount of capital that you end up with is just insane. Like you can possibly retire pretty easily in 2020 if all you were investing was 20,000 starting from 2001. So we probably can't replicate that. What is past, but if you pick up a fund like that, and I mean, this is not just a recommendation for HDFC, I'm just talking in general. You pick up any fund and you go along with it and you maintain a consistent SIP or something, and you keep a dividend option. There will come a time wherein dividend payouts 20 years down the line, 30 years down the line will be so much accretive, and you'll get such high value out of it. You can actually live off that money and substitute your job and your business or other stuff over a long period of time. So it's really another factor which helps on why to invest. As some of the things that I look into. Yeah, it becomes like a helping hand for you over a long term. Yeah. And I mean, I started my investing journey like personally in 2013 or slightly before 2013, but it got a little serious, or rather, I had my salary coming in 2013, so I had a slightly freer hand of trying to do stuff my way. And the dividends that used to come after investing in stocks were like 40 rupees, 50 rupees in 6 months or something, because that was what I could invest and there was nothing more. And it's been 7 or 8 years, 9 years now, and the dividends that I got last year were 1,000 rupees, 1,200 rupees. From the same stocks that
that used to exist, or like more and more buying that I've done in similar stocks or the same stock itself. So that literally, like, it's a very minuscule amount if you think about it in 7 years. But I know I continue like this and in perpetuity for another 10, 15 years. This again will obviously add up and start being more meaningful towards my overall contribution in my income. So yeah. People should also find their own reason to think of why they should invest. There are multiple reasons you can think of, you can talk about, but सबका अलग अलग रीजन हो सकता है इन्वेस्ट करने का. मतलब कुछ लोग तो मजे के लिए भी कर सकते हैं, कुछ लोग मैं जानता हूँ कितने सारे रिटायर्ड लोग हैं जो बस एंजॉय करने के लिए करते हैं, थोड़ा पैसा डाल के they enjoy their retirement life also. Right. So it's always good to do that, but especially for people who have started to earn now, or probably जो 5, 6, 7 साल, like who are into their mid 30s, they're not investing, they're missing on something big. इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करो या रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करो. When you talk about investing, it means that you have to have a clarity of what you're doing with your money. Right, exactly. And clarity तब होगा जब आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है, किस तरह से अचीव करना है, क्या तरीके हैं अचीव करने के. And then each has its own journey towards the goal. So there's no hard and fast specific way to invest, but one should. I mean, personally, I also consider investing in FD, fixed deposit. If one can take judicious decisions while investing in fixed deposit, then also it's a decent enough investment strategy. Like हमने पुराने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि कैसे लोग, अगर आपको इंटरेस्ट रेट का पता हो तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो. Right, exactly. कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है तो उनको लगता है कि इक्विटी की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है. ऐसा जरूरी नहीं. Right. I think we covered decent enough points for as. I mean, this is a very basic thing. We also have an article on our website regarding the same, so one can read about those in pretty detail. The reasons with graphical representations and data as to why one should invest. Yeah, I think that's a good enough point to wrap it around. And as we know, like there can be a lot of subjective reasons as to why someone goes around investing, but there are some timeless principles or reasons rather, which people should account for while they start off on this journey. But take care, and we'll meet you next with another investing topic. So till then, goodbye. Bye.